Hello and welcome. It's been a while, and I think we're all just kind of trying to get to terms of living life the way we have. And we really thought that after 2020, 2021 would be a completely different, year. Everything would be left behind and we could move forward. I think the first very important thing is please mask up. I'm alone in this room, so I don't have to wear a mask. But if you are with people, if you're out, please mask up, keep your hands sanitized, social distancing, as they say. But very important, just keep that mask on. Don't move your head on your chin. So, sorry, I don't want this to become a sermonizing day, but it is important. We all need to go back to our scene. And, I feel very, very privileged and honored to be able to present two people who have not let the pandemic stop them at all. And I think we need to learn from them because if you're creative, you can still go ahead doing your things and keep yourself safe as well. So I'm not going to waste any time. And I feel extremely privileged and proud to invite on today's Make It Myself, Mr. Sohail Riaz Khan. नमस्ते जी, क्या हाल है? बस ठीक ठाक. सुहेल रईस खान. Oh, sorry. My mistake. वो actually वो spelling में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, but yes, thank you for correcting me. Sohail Rais Khan. How are you? हाँ जी, I am very good, sir. I'm very good. I really, in fact, हम बात तो करेंगे ही, but I feel extremely amazed that the kind of music and the amount of work that y'all have put out through this pandemic, time is extremely commendable and very, very. I think we'd love to hear how are you actually going about doing this. But before we do that, I'd like to also invite Shefali Saxena. Hello, good to see you. Good to see you, madam. What is so interesting is we have still not met physically, but I think there's been a bond that's grown just through Zoom and phone calls and emails and WhatsApp. So, yeah, absolutely. I don't feel I have not met you till date. I mean, I feel so connected with you, and of course, Artist Aloud for supporting however they can in pandemic times, even without meeting. Right. Yeah. No, I think, what has been amazing about this whole situation is everybody has really, been extremely innovative, creative, and experimental as well. But I really want to say ki hats off to both of you because non-stop, I think आपने कुछ 6 गाने तो निकाल दिए हैं in the last 6 months. And already 4 are in the queue. They're ready with the shoots and all. Yeah, I mean, see, that's the most amazing thing. Generally क्या होता है कि चलो स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हो जाता है. आप तो वीडियो भी बना रहे हैं. And I mean, I really want you to also talk about that. How are you doing it? क्या challenges आपने face किया? But before we get to that, Sohail ji, I think it would be great for us to hear from you कि आपकी जर्नी क्या रही है अब तक, and why have you gone into this collaboration with Shefali? देखिए अपने स्वामी जी, first of all, I'm basically a classical artist. My father is a classical artist, guitarist हैं, singer हैं. He was the first one who recorded घुंघरू टूट गए, and then lot of people got into that. Then he's a sitarist. जितने भी पुराने गाने आप मदन मोहन जी के सुनेंगे, लता जी के सुनेंगे, it's with my father. तो वो घराना हमारा जो था मेवाती घराना था. एंड हमारे जब जिस टाइप का काम हम लोग करते थे उस वक्त ये वी वर नॉट इनटू मार्केटिंग एंड ऑल एट ऑल. एंड somehow वो संभाल रही है सब, वो सब देख रही है. तो मैं तो गाता बजाता रहता हूँ जो भी उल्टा सीधा मुझे आता है, लेकिन मुझे बढ़ाने के लिए आगे शेफाली बहुत मेहनत करे. तो हम लोग साथ में ही कर रहे हैं. अब देखिए वो भी गा रही है, मैं भी गा रहा हूँ, साथ में कर रहे हैं. It's like ओल्ड ट्रेडिशन, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड के, अपना कल्चर और अपनी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबका म्यूजिक अपनी अपनी जगह सही है. मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी चीज. Right. I mean, definitely, I think
म्यूजिक इज सो सब्जेक्टिव, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अपना ओपिनियन होता है. आई थिंक हर फॉर म्यूजिक अपनी एनीबॉडी टू रियली करेक्ट. नो, एंड द पॉइंट इज कि आपको अपनी एक्सप्रेशन अगर म्यूजिक के तौर पे you want people to actually think, hear your music, or hear your thoughts through music. I think you should have the right to do that. And I've seen the way the two of you are doing it so beautifully and so organically. Shivani, हाँ जी. बात, सॉरी आपको काट, उसने कमाल की बात मुझे बोली थी जब ये आई थी मेरे पास, ने कमाल की बात बोली थी, वो बात पकड़ ली. शायद घोड़े सब दौड़ाते हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में दौड़ाना है वो आना चाहिए. दैट्स द ओनली थिंग विच मेरे दिमाग में वो बात रह गई उसकी वो बात, और उस बात को मैंने संभाल के रखा हुआ, लिख के भी रखा हुआ. That's actually सारी मेहनत तो that's a very strong marketing line, Shefali. So you're the marketing person, in this entire collaboration, I can see. But Shefali, how did you land up meeting Sohail ji, and what triggered this collaborative thought? So honestly, like my teacher लोपिता मिश्रा जी, जिनसे मैंने म्यूजिक सीखा, वॉइस कल्चर की क्लासेस सीखी, उन्होंने मुझे इनसे इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स किया था. And that time I was in Delhi with my parents, and I could just had a conversation on phone with him, and I saw his work, and I told him that मेरा आपका ना मेल मुझे कहीं दिख नहीं रहा, because you're such an eminent sitarist, classical singer. Of course, I'm classically trained, but I am more known as an indie pop singer in the corporate events, in the world of live shows and all, as you know. तो मैंने कहा मेरा आपका क्या तालमेल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. But of course, I've grown up hearing such rich, good music, which my parents have always, instilled me. I come from a family, where my mama is a very, very, good musician. तो हमारे घर में सब सुनते बहुत अच्छा music है, rag and classical and all that. I always had a flair and love for that kind of a music. But unfortunately, right now we are in that industry, especially me, जहाँ पे people want to hear sounds more than melodies. Or people would like to see a live performer rocking and mesmerizing, and rather than sitting down and hearing the music. So वो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा वो खालीपन लगता था कि आप परफॉर्म करते हो, आप गाते अच्छा हो, and okay, you're a good entertainer, but कहीं ना कहीं वो खालीपन था कि as a music what you are contributing, because what I was doing was something which was like ठीक है आज है, लेकिन tomorrow it might not sustain. But classical, but when I got to hear Sohail ji, I got goosebumps of the kind of such melodious, lovely music, and I had tears in my eyes. That one, he's very, very hardworking. He's a person जो रात के 3 बजे उठकर भी ना, मतलब he'll just sit down if he gets something. But even if he's sleeping, he will tap his feet and he will count all the matraएं and taal and tane on his fingers. So I got very moved that such an amazing musician, so passionate, and also he's updated also with the latest sounds. ऐसा भी नहीं है. He is a classical artist, but he knows what runs and what does not run. So he keeps upgrading himself in technology, in machines, in softwares and all that. So I thought now, I guess, I believe that when you aspire something very strongly, universe start gifting you back. So I felt that Sohail ji got connected with me in pandemic times. I said, okay, what am I doing? Why not let me just meet him and see how we can create new content where I can also fit in, and we can together do something which is outstanding and creating value, and something which lasts for ages to come. And that is how that was the beginning. And how is the feedback been? So I'll tell you that. How is the feedback been so far, Shefali? So I have this, friend circle or fans or followers, you can say, who is in the age group of that college, 20 to 25 years of age, 20. Sohail ji se bhi mile hain wo. Will you believe they got so much more than me? They started falling for Sohail ji's music, especially Raja ji, which we released yesterday on Holi. So there's a girl who is a co-partner with me. Oh my God, she said it's a dream. If a 25-year youth gets excited to hear this music, because they've not heard only good music. So when they hear and they say, oh, such kind of music exists, such kind of royal, rich heritage music exists. And she said, I want to be a part of such videos. My parents will be so happy and so proud. She comes from a royal family.
and I was like so touched. My parents are so proud of me, and today I feel I've got more respect added to my name, the kind of music I'm getting to do with Sohail ji. And I feel that this music should not get lost. It should get publicized, promoted, and reach to the masses, because people have not heard good music. If they haven't heard, how will they know? So I always say in all my campaigns that please support the good content and true artists. No, of course. Yeah. I mean, I think, what is really nice is जैसे सोहेल जी जो, I mean, जब हम, we hadn't gone live as yet and वो सितार बजा रहे थे, and then you realize that it doesn't, you don't have to be either a classically trained artist or an indie pop artist. You can have a lovely amalgamation of both. Absolutely. Because music तो music ही है, और सभी kind of music में सात सुरी है, Yeah, you're right. Yeah, but Sohail ji, before we speak anything else, I'd love for you to just play something on the sitar. थोड़ा कुछ बजा दीजिए. ये जो गाना हम लोगों ने मिलके किया ना, शिफाली और मैंने, ये मीरा का भजन था, हमारे राजा जी. एंड मेरे एक दोस्त हैं अपने तमीम, उन्होंने मुझे ये सुनाया, थोड़ा सा फिर चेंज करके इसको मैंने रिकॉर्ड किया. इसको गा के आपको सुना, देखिए अगर आप लोगों को पसंद आए. Sure. This is based on Rag Des, I feel. मारे राजा जी है, मारे डेरे आओ ना, हूँ तो थारे लिए दारू पाशा. मारे राजा जी बोते तो जगमग करे, ते प्यालो करे पुकार, छोटी लाडी दे शाखाने, तुम पियो ना मातोला. मारे राजा जी शुक्रिया. Such a beautiful instrument. I mean, सर बैठ के I can just listen to it without any, I mean, it's like बहुत soulful है. आप एक नोट भी बजाओगे तो it feels like as if you're touching the soul. It's a beautiful instrument. अलग दुनिया है. हाँ, बिल्कुल. So tell me, अभी आपने हर एक गाने का वीडियो बनाया है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं ये पैंडेमिक के टाइम में? क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सब कर सकते हैं. हाउ आर यू शूटिंग वीडियोस, स्पेशली जो राजा जी का आपने किया है? आई मीन ऑफ कोर्स द लोकेशन इज पॉसिबली बड़ी अजीब सी बात है, एंड एक तरफ से सही भी है और नहीं भी है. व्हाट्स हैपनिंग इज देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. आप पुलिस परमिशन लो, ये लो. आई मीन इंसान अभी ऐसे कल्चरल, हमें बहुत दिक्कत हुई है इसको शूट करने में. और सच बताऊं, ज्यादा मेहनत शेफाली की होती है, बिकॉज एवरीथिंग शी हैंडल्स. मैं तो आके गा के बजा के राइट फ्रॉम द मेकअप टू हेयर टू गेटिंग द थिंग डन, वो चीज बिहाइंड द सीन. जब तक वो तैयार होकर सुबह से बैठी, जब तक उसका आता तो शाम तक तो वो खत्म हो जाती, थक जाती, सारी एनर्जी उसकी खत्म हो जाती. तो क्या हो रहा है कि मतलब एक फ्री हैंड, जैसे कहते थे ना, अगर अभी आप यहाँ शूट करने जाए तो पुलिस आ जाएगी, भैया हमें दे दो, यू कैन नॉट शूट लाइक दैट, यू नीड परमिशन. तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, लेकिन एनीवे रास्ते बन ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से. एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस जो हो रहा है, वी आर शूटिंग एंड वी आर रिकॉर्डिंग. तो अभी तक तो हम दोनों बचे हुए आगे फिलहाल. और जैसे वाइसा वर्सा
he's also been working very hard. और naturally ताली दो हाथ से बजती है. एक बात आपको बताऊंगा, I always say that कि उस्ताद हो कामिल मुकम्मल, शागिर्द कामिल अमल करने वाला, ऊपर वाला हो शामिल तो सब कुछ हो सकता है. So this is everything is we leave it to God. नहीं बिल्कुल. हम अपना I काम करते think हैं. हाँ, आई थिंक आपकी अगर इंटेंशन प्योर हो और आप उसमें हार्ड वर्क डालते हो तो यू नो द यूनिवर्स काइंड ऑफ कम्स टुगेदर एंड टेक्स केयर ऑफ यू. बट टेल मी, आप शूट के बीच में मास्क पहने रखते हो और सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करते हो या हाउ इज इट? आई मीन शिफाली, हाउ हैज दैट एक्सपीरियंस बीन? No, he will tell because हमारी लड़ाई इस बात पे होती है. I keep on telling him, wear your mask, maintain social distancing, even in the studio also. If musicians Right. will come or the our DOP will come to Raman sir, maintain my announcements will be time and again as a reminder. Please maintain social distancing. Please wear mask. और मैं I'll carry my big sanitizing sanitizer bottle and I'll continue spraying. Even the people who come for permissions, वो पुलिस वाले में उनको भी सैनिटाइज करती रहती. मैंने कहा ये प्रसाद अभी ये लेते रहिए साथ में. So we really take lot of precautions in that. We keep a very small team for that reason. Of course very well equipped team, but we try to keep it as small as possible so that we can maintain social distancing. बट यस काम तो हो ही रहा है और आई बिलीव यही वाला टाइम है जब हम अच्छा म्यूजिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस राइट नाउ. हाँ जी, सॉरी, ज्यादा चांसेस है लोग बैठ के घर बैठे बैठे सुन तो लेंगे, बोले जरा देख तो लो भाई कौन है ये लोग. I mean, yeah, I feel new films are not releasing, so it's a good time. People want to hear new good music. So yeah, no, so it's interesting actually. हमने recently, in fact, my colleague shared this data with me कि 2020 में just between April and December there have been some 1,300 new singles, some 700 new music videos, and some 200 EPs or albums that have been released, and all of them are original non-film content. So basically, Bollywood band और expression शुरू. Independent music. Yeah. बिल्कुल. And for someone like me who started this business back in 2010 और शुरू करके उस टाइम पे तो हम अकेले थे, एक हंगामा ही था जो करने की कोशिश कर रहा था. अभी तो 6-7 players आ गए हैं और it's nice, the more players you have in the business, it becomes an opportunity for multiple people to work with everybody. But at the end of the day, if the industry collectively helps growing the business, बस talent को और मौका मिलता है, Yes. So yeah. So what is the plan? राजा जी तो अभी होली आ जाएगा और फिर I think 2-3 हफ्ते के बाद आपका नेक्स्ट गाना आना पड़ेगा. So what are you working on right now? सोहेल जी. हाँ बताइए. अभी एक बहुत खूबसूरत हम लोग गाना कर रहे हैं बारात करके, और एक सूफी गाना कर रहे हैं अपने मन रे मौला की बात करें. Somini ji, you will love the music क्योंकि I basically only work. और मेरा कोई भी गाना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एवरेज से बेटर होता है. कोई भी गाना मेरा आप उठा लो. तो बस आप देखिए डिफरेंट योना में हम लोग काम करें तो बेटर है. सेम योना देते रहेंगे तो फिर वो उसमें टाइपकास्ट हो जाता है. तो अब जस्ट शिफाली तो अब इस वक्त दिल्ली में बैठी, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो वापस आ जाए. अभी कल ही तो आई हूँ. कल मुझे छुट्टी मिली है उनसे. It's been 4 months since Diwali. I didn't visited my home, my family. I saw you were also in Chandigarh. The best of the winter's time you celebrated, you being there with your family. So I was like so much tired. हम लोग ने 23 दिन के अंदर 4 वीडियो शूट किए 23 days में, जिसमें से क्या होता था, एक का प्री प्रोडक्शन चल रहा था, एक का पोस्ट प्रोडक्शन और एक का रिलीज एंड प्रमोशंस. आपने भी देखा कितना बैक टू बैक हम लोग, मतलब in this month 2 videos we released in a span of only 2 weeks. So a lot of work stress. Yeah, so I thought let me just take a little break, and of course हमारा content तो ready है, वो तो चलता ही रहेगा. सोहेल जी के पास इतना अच्छा music content, like he keeps working and I keep doing my own collaborations and how the video can be done. अपना रियाज करती रहती हूँ. Yeah, the thing is, हाँ जी, कमरे में बैठ के AC ऑन करके अपने गाने बना के बैठ जाता हूँ. सारा भागदौड़ यही करती है.
नहीं अच्छा है। आई मीन देखो आपका एक रोल है, शी हैज अनदर रोल, तो दोनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, इसलिए तो फाइनली कंटेंट निकल आता है. एंड डेफिनेटली आई मीन यू नो फॉर समवन लाइक अस व्हेन वी सी आर्टिस्ट हु आर सो एंगेज्ड इन देयर वर्क, कभी कभी क्या होता है आर्टिस्ट एक गाना बना देता है फिर कहता है यार मैं तो हिट नहीं बना. एक गाने से तुम थोड़ी हिट बन सकते हो. एंड यू नो यू आल्सो हियर अबाउट वन हिट वंडर्स. इट्स अ जर्नी, यू इवॉल्व. आप अगर अभी बोलते हो कि यू नो यू आर लुकिंग एट मल्टीपल जॉनर्स, every time you create new content in a new genre, you're actually creating a new fan base, you know, because आप अपने as in, आपका योर बेबी यू नो इट्स लाइक समथिंग न्यू. और सच बात बताऊं मैं आपको, इज लाइक अ पर्सन लाइक मी इज, जैसे कहते हैं ना आप स्विमिंग नहीं छोड़ सकते, आप ड्राइविंग नहीं छोड़, ऐसी बहुत सी आई कैन नॉट लिव विदाउट म्यूजिक. और वो मेरे फैमिली में था, मेरे अंदर ही है, तो वो मैंने शुरू से लेकर आज तक उसको कमर्शियली देखा ही नहीं. बिल्कुल. क्योंकि हमारे जो घर में एक टिपिकल था, वी हैड आवर पीपल, आवर क्लाइंट्स. आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. साल में मेरा एक अमेरिका, लंदन, ऐसे दुबई एक चक्कर होता है हर जगह. तो मेरे बंधे हुए क्लाइंट्स थे. पर व्हेन शिफाली केम, शी सेड इससे ग्रोथ नहीं होगी आपकी. आप समझ रहे हैं? आई वाज नॉट एट ऑल इनटू, आई रियली एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. आई जस्ट, मैं इसको सिर्फ ये बोलता हूँ कि मुझे बोलो कहाँ गाना है, कहाँ बजाना है, बाकी आप देख लो आपको क्या करना है. सीरियसली, क्योंकि वो मैंने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया. नीदर माय फादर नो माय फैमिली, जो भी हमारे घराने के लोग हैं वो तो अभी जो मैं कर रहा हूँ अपने गजेंद्र सिंह का, अपने सुरों का एकलव्य, आई एम कमिंग इन द मीडिया एंड ऑल एज अ जज एंड ऑल, बट आई हैव नेवर गॉट इनटू ऑल दिस. एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड अनूप जी. काफी वो उनके साथ गेट्स मी अ लॉट ऑफ वर्क, introducing to people around. और फिर शिफाली तो सोने पे लगा है, so let's go ahead. What's happening? No, I always tell him that his voice should go to the places, his music should travel to the places. Of course, मेरी voice भी जा रही है, and of course, जितना जो मेरे potential I'm working out to take the music, good music to the places. Yeah. That's it. No, I think it's amazing, Shipali, because trust me, most of the artists that we also interact with are like Sohail ji. They just want to work on the music and the art. You know, they're not interested ki, and it is, I understand, you know, artist बन के तुमको लगता है कि यार मेरा म्यूजिक अगर मेरे बारे में नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा. But I think this, I mean, I personally believe this combination that you both have, you know, will show its fruits in the long run, and that is something that you know you are working towards to see the fruits of it. So I really thanks to people like you who are giving us this. और क्या है ना, इट्स सैड बिकॉज मैं ऐसे आर्टिस्ट को देखो, हमारे पास तो घर में सारे इक्विपमेंट्स हैं, यू नो, वी हैव आवर ऑडियोज, वी हैव द वीडियोज. एक इंसान जब स्टूडियो जाता है वो इतना जाता हैव दैट थिंग. तो काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग कुछ कर सकें. पहले अपने लिए कर लें, फिर उनके लिए कर लें, बट डेफिनेटली आई हैव दिस इन माइंड एंड इवन शी हैज इन माइंड कि वन स्टार्ट दिस, थोड़ा सा हो जाएगा ना ये, तो फिर कुछ आर्टिस्टों के लिए सोचेंगे, यू नो. और जरूरी है, हमारे वहाँ टैलेंट की कमी, एक से एक टैलेंट है, एक से एक लोग हैं. No, I think at the end of the day, you know, see, that is the whole thing about Make It Myself, Sohail ji, कि आज अगर आर्टिस्ट ने अपने खुद के बल पे सोचा कि मैं अपना म्यूजिक करूंगा, मैं अपना यू नो मार्केटिंग करूंगा, it's not about कि कोई मेरे लिए कर नहीं रहा है. It is more about कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ और मुझे जैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. You know, trust me, in the times when artists used to be signed on, you know, by somebody who would invest into them, we all know कि आर्टिस्ट वो नहीं कर पाता था जो उसको एक्चुअली करना है. You know, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल जाता है, बट कोई भी पैसा नहीं डालता विदाउट द रिटर्न्स. और जो निचोड़ के आपको आर्टिस्ट के तौर पे आपसे रिकवरी लेते थे, you know, that is not what you have to worry about right now. You are doing it completely in your control, and that's the right approach. बता दूं, as far as like, you know, I have never bothered about these things in my life. By God's grace, वैसे सब ठीक था, लेकिन ये जरूर है कि जो जितना भी मैं गाते बजाता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि I mean अच्छे से अच्छा कर सकूं. I don't know what's happening in the world. I was never bothered that time also. उस वक्त भी मैं कंपनीज जो आती थी मेरे पास, it was naturally because of my father and all, मुझे थोड़ी सी आसानी हो गई, but things have not been easy at all. आज No, of course not. Yeah. है कि मैं मेरा इतना, I mean मैं तो बात ही नहीं करता, शी टॉक्स,
मैं अगर ये मुझे बोलती भी नहीं कि ये कॉन्टैक्ट है, आप इससे बात कर लो, आई सेड मैं बात करके करूंगा ही क्या, बिकॉज मैं आई विल नॉट बी एबल टू कन्विंस देम, तो इट्स बेटर दैट यू हैंडल दैट साइड। तो हर काम अगर हर आदमी एक ही आदमी कर लेगा तो कैसे होगा, आप समझ रहे, सबके डिपार्टमेंट मार्केटिंग में है उसके आगे, तो आई लीव इट टू जिसकी जो चीज है वो करे इंसान, आई फील दैट इज बेटर, जो जो जिस चीज में अच्छा है वही करे, इन द एंड रिजल्ट क्या है वो देखना है। Oh, result आएगा. So it's like I said, it's a journey, and see, we are also living in a very different time. अभी मैं उस इरा से भी निकली हूँ जहाँ पे एक टीवी चैनल हर एक गाने को हिट बना देता है, था rather. अभी के केस में लोग टीवी में देखते ही नहीं है म्यूजिक. Most of the time it's on, the device has changed, the platform has changed, so everything is changing. So I think it's important कि, as an artist, when you are continuing to create content and someone like you, Shefali, understands, the ecosystem, I think it's an amazing combination. And, I mean, Godspeed to both of you to be able to really make it into a commercial, collaboration in that sense. And I look forward to you for all the support. Now you are heading artist committee of IMA also. So I always tell, although Sohilji doesn't know about IMA and all, but I keep telling him that it's Event Entertainment Management Association. They are the people who do the biggest events. They are the people who, take forward the artists. So I keep sharing. So of course, your support is incredible. And of course, Hungama Music, Hungama Artist Allowed, they have been I always loved the way, I love the code of conduct of each one of you I dealt with. Sometimes I lose my patience, but I always find everybody completely very, very composed. And you understand, basically because you're an artist yourself, so you understand the mindset of an artist when an artist is releasing a new song or a new video, because he put so much into it and it just goes like that. So मैं तो यही कहूंगी कि घर वालों के साथ ही तो लड़ाई होती है, अगर बाहर वालों के साथ नहीं होगी. So you are a part of the family now. So आप बहुत शुक्रगुजार हैं स्वामी, सीरियसली आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. एटलीस्ट आपने ये प्लेटफॉर्म दिया. कुछ आप जैसे ही लोग हैं जिसकी वजह से अभी म्यूजिक टिका हुआ है. अदरवाइज यू सी व्हाट्स हैपनिंग, एवरीथिंग हैज जस्ट डिटोरिएटेड वेरी बैडली, यू नो दैट, क्योंकि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, आप समझती हैं. और जितना हो सके बस यही है कि सब लोग जहाँ तक हो सके आप लोगों को सपोर्ट करें जितना हो. Definitely. I really I have so much of faith in Hungama Artist Allowed, and because it's headed by you, so even more. And as I told you, I knew Vivek Paul before Somni Paul, so I always have a very different bond with Somni. I know her through her husband, so how much high he speaks about her as a professional, as an artist, like how true you are and how humble you are and all. So for me, I feel I'm in safe hands with Hungama Artist Allowed. I'm in safe hands with my content or with its reach, or doing the justification in terms of the revenues or whatever, like basically promotions and all. So thanks for being there. I'll tell you, I won't take credit for this because I feel blessed that the team that is a part of it, also the extended team, they understand the seriousness of course, yeah. All the team correct, yeah. So we I work think behind the scenes so much. Yeah. No, and for us, we've always looked at one thing कि हम ये नहीं सोचते कि आर्टिस्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आज शुरू किया है कि बरसों से है. It's about the creativity, and that's all that matters, And if you look at it, आज के टाइम में कंज्यूमर भी वैसे है. वो नाम देख के नहीं डिसाइड करता है कि गाने को सुनूंगा कि नहीं, वो गाने को सुन के फिर डिसाइड करता है या आर्टिस्ट के बारे में और जानना चाहता है कि नहीं, So I really think that the fact that you all have continued to create content, and like you said, abhi 4 gaane aur already ready hai. I think, this journey is going to be, as they say, God willing, a long one. And हाँ जी. नहीं, अभी हम लोग इतना क्रिटिक हो गए ना अपने काम को लेकर. You remember our first video, and now with every video we are growing in size and infrastructure. अभी आने से पहले एक वीडियो हम शूट करके आई सोहेल जी के साथ, which we were supposed to release in April. घूंघट नाम है उसका वीडियो का. We ourselves are scrapping the video. मतलब सोहेल जी today said we will not do this, we will reshoot this, or maybe let's scrap off, let's work on something. तो अभी ऐसा हो गया, हम खुद अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं कि हम ये
And I told him also, let's have a neutral opinion. Let's first show to Somini, and then no, don't show it to Somini. Abhi we are scrapping it off. So it's like that. But of course, audio is there. So हम लोग खुद video में हम लोग बहुत we are really working a lot in terms of concept, in terms of looks, feel. We want to go very earthy, very very raw and very natural in the like what you said. Even आप सहरा देखिए हमारा जो which was like 2 videos before. सहरा was also like very people used to say कि वैसा एक जो गाँव की बंदिश होती है ना वैसा वाला फील आता है जब आप सुनो उस गाने को और इसका वीडियो भी देखो very simple, beautiful, undiluted. तो वो वैसा हो गया है कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा we try to do video which is not very commercial also but at the standards at so ये बात बिल्कुल भैया नहीं। और कुछ कह रहे थे कहते हैं कि वो कोई भी सक्सेसफुल चीज के पीछे औरत होती है वरना कोई चीज सही नहीं होती। ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। So you have 2 ladies now for your music content. तो कोई औरत करेगी वो काम, वो आदमी अभी तक वैसा नहीं है। आई फील दैट। तो अगर आपको किसी का साथ मिल जाए तो फिर उसको बस निभा के रखना चाहिए। That is very sweet. मेरे पास that is very sweet. Let's hope something works out together, all of us. Absolutely. So before we say bye, I'd love for some musical kind of collaboration that we can see right now between the two of you. Can we have some? हाँ, कुछ गा के सुना दीजिए। अभी वो सितार वो वाला गाओ। लाउरी। अच्छा, ओके। आप शुरू करो, फिर मैं इसका मुखड़ा गाता हूँ। आप शुरू कीजिए। तो ये सहरा था जो 2 महीने पहले रिलीज हुआ था हमारा, and today we see Sehra has grown even more, so people have loved it. Thank you for really giving so much of love and support to this song. Kuhu kuhu boli manva koyaliya करजवा मलागे मारे कटरिया मोर नाचे पीहू पीहू पपीहरा बरखा सतावे आजा सजरिया। मेरा स्केल यहाँ मिला हुआ है तो फिर मैं यहाँ गाता हूँ। लाउरी मालन तेरा गूंज परिया, लाउरी मालन हीरे मोतिया की गूंदे गूंद लड़िया, लाउरी मालन तेरा गूंज परिया। चांद सा दूल्हा अरे बाराती, चांद सी दुल्हा डोले मोरे अंगना, हीरे मोतियन की गूंदे गूंद लड़िया, लाउरी मालन तेरा गूंद कलिया। ये राग शंकरा बिहार की बंदिश है, बहुत पुरानी हमारे घराने की बंदिश है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। I can't. You're mute. You're mute. Yeah, sorry. Can you hear me? Yeah. मैं इतनी excited हो गई थी आप दोनों की आवाज सुन के, then I forgot that I was on mute. But I wanted to read some of the messages that comments that people have put. So Ahmed Bhai has written IK, I presume that's I know. Amir Sheikh has asked me to mention his name, so मैंने उनका नाम बोला है यहाँ पे. हशम शिनवारी हाय कैसे हो कहते हैं. दिबांजन बहादुरी ने कहा ब्यूटीफुल. I think he typed when आप सितार बजा रहे थे सुहेल जी, so definitely it was beautiful. राहुल लॉर्ड, हाँ जी सॉरी. थैंक यू सो मच. लोग देख रहे हैं. हाँ जी. Rahul Lord says, I mean, this was about the numbers that I mentioned कि 2020 में कितने releases हुए थे. So yes, you're right, Rahul. Independent music is flourishing, and
we definitely need more people to consume it. Vidya Rao, I think she knows you. She says best. She's my very dear friend. Yeah. Okay. She says best wishes, Shefali. I know you since How's over it? 10 years and I know your dedication and passion. Laksh KV says Gujju song. I presume जो गाना आप गा रहे थे और either I think वो फरमाइश कर रहे थे कि गुज्जू सॉन्ग गाइए आप. अब गुज्जू सॉन्ग भी बनाते हैं जल्दी. हाँ. Then और उन्होंने ये भी कहा है बढ़िया जनाब. तो आपकी आवाज सुन के लोग सुहेल जी उन्होंने बढ़िया बना. And Nizam Luch, वाह वाह क्या बात है. हाँ जी. So these are some of the comments that have come. Very sweet of people to bother to write. I think it takes a lot. You know, मैं हमेशा amazed होती हूँ जब मैं ऐसे comments देखती हूँ या likes on. You know, people actually care to leave their messages, and I think that's a very good thing. So and it means so much, so much. It means so much of encouragement. I want to apologize that we, because of technical issue, we started our show a little late. So I don't know if few friends of mine have left. So yeah, so sorry, just happens sometimes. Yeah, and I've been a little under weather also. So I was just trying to pull up my strength and, do it. But thank you very much for all the viewers who've been watching. Thank you, Hangama Artist Aloud. Thank you, Somini. Thank you, Kalpesh. Jatin and Ayushman for working so hard behind the scenes and remaining connected with me at any hour of the day. How sweet. No, I think it's a pleasure and we're just looking out. It's the music first and that's what keeps us going. So thank you, Suhail ji. Thank you so much. Thank you, Shefali. And Haji. Thank you. Yeah. You're Thank welcome. you so much. See you soon. Wish you a very happy Holi. Please You do too. hear Raja ji. It's a holy song. Enjoy it with your family and spread the word for the good music. Thank you, each one of you, for having us. Absolutely. Bye. Do watch Rajaji. It's a beautiful video and a great song. So catch up soon. Bye.